Morning, students. Today we are going to deal with a very interesting topic, that is pheromones. Now, what are pheromones? Pheromones हार्मोन्स की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, but they are work outside the body. They induce activity in other individuals, such as sexual arousals. Most insects use pheromones to communicate. Basically, these are the hormones-like structures जो कि एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में काम आते हैं. The term is derived from a Greek word that is carrier of excitation and was founded out by a German biochemist in 1959, Peter Carlson, and Swiss entomologist Martin Brischel. अपने इन्वेस्टिगेशन में he found out this chemical first time in termites. In 1959, German chemist Carlson and Budent isolated and identified the first pheromone, a sex attractant from silkworm moths. पहला pheromone silkworm moth से मिला था, that is Bombyx moriae. They coined the term pheromone. यानी सबसे पहले pheromone वर्ड का इस्तेमाल जर्मन केमिस्ट ने किया था. Pheromone are exocrine यानी शरीर के बाहर ये निकलते हैं, secret outside the body, hence they were called as, पहले इनको हम एक्टो हार्मोन्स भी बोलते थे. टाइप्स, ज्यादातर 4 तरह के फेरोमोन्स होते हैं, प्राइमर एंड रिलीज. रिलीजर आर फर्दर बी subdivided, signaler and modulator. They are based on the response shown. Pheromones can be classified into 2 groups. किस तरह की रिस्पॉन्स देते हैं उसके बेस पे 2 तरह के हैं, प्राइमर और रिलीजर. प्राइमर pheromones, they trigger of no physiological changes in the recipient without any immediate change. डायरेक्ट कोई चेंज, कोई असर उसके बिहेवियर पे नहीं दिखाते, but they works with the help of taste. Basically they are the sense organs, taste glands. Caste determination and reproduction in social insects like ants, bees, wasps and termites are mediated by primer pheromones. These pheromones are not of much practical value in IPM, insect pest management, यानी कीड़ों को मारने में इनका कोई खास इस्तेमाल नहीं है. Releaser pheromones, these pheromones produce an immediate change in the behavior of a recipient. जो इसे रिसीव कर रहा है, जिसके पास ये pheromones की स्मेल जा रही है, उसके बिहेवियर में ये एकदम से चेंज लाता है, दैट इज रिलीजर. रिलीजर हार्मोन्स कौन कौन से हैं? सेक्स हार्मोन्स, एग्रेशन, अलार्मिंग हार्मोन्स एंड मॉड्यूलेटर हार्मोन्स. और ट्रेल हार्मोन्स यानी जिसका पीछा करके पहुंच जाते हैं एनिमल्स एक दूसरे के पीछे. रिलीजर फिलोमेंस एक्ट्स थ्रू ऑल्फैक्टरी स्मेल ग्लैंड्स के थ्रू ये काम करते हैं, which are directly related with the nervous system of the recipient and modified their behavior. They can be successfully used in pest management. इन pheromones को हम pest management में इस्तेमाल कर सकते हैं. In Lepidoptera, these are the orders of the insects. Sex pheromone system is highly evolved. Pheromone producing glands in Lepidoptera, they are produced by irreversible glands at the tip of the abdomen of females. The posture shown during pheromone release is called calling position. Now the types of pheromone signaling, कितने तरह के signals ये देते हैं? Alarming signal, insects set an alarm to warn for the danger. Trail pheromone, a guide for food or backup of their homes. Ants में अक्सर देखने को मिलता है. Death pheromone, insect dies and needs to be removed. Sexual arousal pheromones alert the insects that they are ready to mate. Sexual dissipation pheromones food insects to come to them and then feasting on them. Instruction pheromones on what tasks need to be done. Honeybees में देखने को मिलता है. Epidiotic pheromones tell other females to lay their eggs elsewhere.
what are the properties of pheromones? क्या है pheromones? Many pheromones are small volatile organic molecules which are unstable in aqueous environment, blood or urine में stable नहीं रहते हैं. Pheromones could be something detected by smell, including by the vomeronasal organs or by taste. Saliva and other sources of pheromone function in livestock reproduction, nursing, social interaction in cattle, pigs, sheep, and goats. Wild ruminants have active glands between the digits of their feet, but domestic ruminants only have remnants of those glands that may or may not be functional. The pheromone signal can travel enormous distances even at a low concentration. That is the strength of pheromone. इसी के बेस पर एनिमल एक दूसरे का पीछा करते हुए कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं. In humans and other animals, taras in the olfactory epithelium function as olfactory receptors, that is a kind of pheromone that detect volatile amine odorants including certain pheromones. Non-human animals indicated that taras in the olfactory epithelium can mediate attractive or aversive behavioral responses to a receptor. Reptiles or amphibia or non-primates animals, they are also having olfactory membrane that works as a vomeronasal organ or the Jacobson organ, that is a kind of pheromone. कुछ इंसेक्ट्स और उनसे निकलने वाले फेरोमोन्स, सिल्कवॉर्म, बॉम्बेक्स मोराई, जूलॉजिकल नेम. फेरोमोन्स का नाम है बॉम्बिकॉल. जिप्सी मॉथ, दैट इज प्रोथेशिया डिस्पर, फेरोमोन का नाम है जिप्लियोर. कैबेज लूपर, ट्राइकोपल्सियाने, फेरोमोन जो ये रिलीज करता है लूप्लियोर. हनी बी क्वीन, दैट इज एपिस इंडिका, इंडियन स्पीशीज एंड देयर आर सो मेनी स्पीशीज. दे ऑल्सो रिलीज अ सब्सटेंस यानी फेरोमोन जिसे हम कहते हैं क्वीन सब्सटेंस. फेरोमोन्स के क्या क्या काम है? फेरोमोन्स ऑफ सर्टेन पेस्ट इंसेक्टिसाइड्स सच एज जापानीज बीटल, acrobat ant and gypsy moth can be used to trap the respective insects for monitoring purposes. फेरोमोन्स को हम कहीं स्प्रे कर दें तो वहाँ बहुत सारे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होकर इकट्ठे हो जाते हैं. हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं फॉर द स्टडी पर्पस और फॉर देयर मैनेजमेंट. To control the population by creating confusion, to disturb mating and prevent their egg laying. That's all about the pheromones. Thank you.